वेलकम टू दिसंबर ऑफ 2022। आईएल्स के इंट्रोडक्टरी राउंड के कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स जो नवंबर के महीने में पूछे गए, पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर में भी कंटिन्यू होंगे। सो लेट्स लुक एट सम ऑफ दोज क्वेश्चंस। और इफ द एग्जामिनर हैपन्स टू आस्क यू वन ऑफ दीज टॉपिक्स, सो आपके इंट्रोडक्टरी राउंड के क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम रहेंगे। आप स्क्रीन को पॉज और स्क्रीनशॉट लेके इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक है कंप्यूटर, और ये बहुत कॉमनली पूछा जा रहा था नवंबर में, और पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर में पूछा जाएगा। कंप्यूटर पूछा गया, उस समय इंट्रोडक्टरी राउंड के क्वेश्चंस थे। इन व्हाट कंडीशंस वुड यू यूज अ कंप्यूटर? व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू यूज्ड अ कंप्यूटर? What will your life be like without computers? And last question, in what conditions would it be difficult for you to use a computer? ये questions थे computer topic के। Let's move on and go on to the next topic. ये बहुत frequently और almost हर दूसरे तीसरे student से पूछा जा रहा है। It is called snacks. Snacks के कुछ questions हैं। What snacks do you like to eat? What snacks did you eat when you were young? When do you usually eat snacks now? And the last question, do you think eating snacks are healthy? ये snacks के 4 questions हैं। एग्जामिनर की मर्जी है इसमें से 2 पूछे या चारों पूछे। Let's go on and look at the next topic. अगला टॉपिक है वेदर। वेदर कुछ पुराने टॉपिक्स में से आ रहा है, और आई थिंक ये लास्ट ईयर भी इस पैटर्न में था। सो वेदर के क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज द वेदर लाइक वेयर यू लिव? डू यू प्रेफर कोल्ड और हॉट वेदर? डू यू प्रेफर ड्राई और वेट वेदर? एंड द लास्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज, डू यू गेट इन द हैबिट ऑफ चेकिंग द वेदर फोरकास्ट? व्हेन एंड हाउ ऑफन? आई रिपीट द लास्ट क्वेश्चन, do you get in the habit of checking the weather forecast? When and how often? Let's move on to the next topic. अगला टॉपिक है favorite place. इंट्रोडक्टरी में ये टॉपिक पूछा जाए तो आपके क्वेश्चंस रहेंगे, where is your favorite place to sit? Do you always sit down for a long time? Do you feel sleepy when you are sitting down? And last question, when you were a kid, did you usually sit on the floor? कई जगह पर यह टॉपिक फेवरेट प्लेस है, और कई जगह पर इस टॉपिक का नाम दिया गया है सिटिंग डाउन। लेट्स मूव ऑन एंड गो ऑन टू 23 नवंबर में के आसपास रिपीट हुए टॉपिक्स। एक इंट्रोडक्टरी राउंड टॉपिक है वॉच, और वॉच के क्वेश्चंस हैं, डू यू वेयर अ वॉच? Have you ever got a watch as a gift? Why do some people wear expensive watches? And do you think the watch is essential for you, and why? Let's look at the next most common topic, that is singing. And singing का पहला question है, do you like singing? Have you ever learned how to sing? Who do you want to sing for? And the last question in the topic of singing is, do you think singing can bring happiness to people? Let's move on a little ahead. Morning and evening, ये लास्ट क्वार्टर में भी पूछा जा रहा था, और अब दोबारा आ रहा है, और पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर में भी पूछा जाएगा। मॉर्निंग और इवनिंग के कुछ क्वेश्चंस, डू यू लाइक मॉर्निंग और इवनिंग? व्हाट डू यू यूजुअली डू इन द इवनिंग? आर देयर एनी डिफरेंसेस बिटवीन व्हाट यू डू इन द इवनिंग नाउ एंड व्हाट यू डिड इन द पास्ट? आई रिपीट दिस क्वेश्चन, आर देयर एनी डिफरेंसेस बिटवीन व्हाट यू डू इन द इवनिंग नाउ as compared to the past? And the last question, what did you do in the evening when you were little, and why? Street markets अगला टॉपिक है। स्ट्रीट मार्केट्स काफ़ी टाइम से
इंट्रोडक्टरी राउंड का हिस्सा रहा है रियल एग्जाम का। लेट्स लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस सीरीज। स्ट्रीट मार्केट्स। डू यू एंजॉय विजिटिंग स्ट्रीट मार्केट्स? Do you prefer shopping in the shopping mall or on the street market? When was the last time you went to a street market? What do people usually buy in the street markets? And are there many street markets in your country? The last question in this series, would you like to go to the street market in a foreign country and why? Well, these were the topics which were asked in the month of November and most likely to continue for the month of December. So pay attention and practice them. My name is Vikas. I represent Insignia Overseas. It is one of the leading IELTS and PTE institutes in Kurukshetra. Thank you so much for watching. Have an incredible day.